जब ये ऑपरेशन भी हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, एंड इवन टुडे एज वेल, जनरली हाउ द मीडिया इज रिएक्टिंग, डू यू थिंक हम उस टाइम पे तो यू नो हाउ मीडिया रिएक्टेड, पागल हो गए थे आई एम ग्लैड यू सेड दैट, बकवास कर रहे थे. बट उसमें अभिजीत अय्यर मित्रा made a very valid point in my podcast with Smita Prakash ji on ENI. He said part of it was deliberate campaigning to Yes. to create misinformation, which, because Abhijit said it, I understand, because Abhijit is a man of immense wisdom and sense in defense matters, and since I wasn't privy to that information, Abhijit said a lot of it was deliberately done or instructed to be done to misguide. So I think misinformation campaign they tried to do with Pakistan, but in my opinion, I would slightly handle it differently. I would not allow this kind of thing. But I think everyone has their own strategy. But that's what Abhijit's point of view was. okay. But I do know that the government at some point did ask people to tone it down, the channels to tone it down. I did follow up on X that government have asked it, but there was no formal. How can you? We are a democracy, यार. कैसे बोलोगे यार? आप मीडिया को बोलोगे आपके पॉडकास्ट को सरकार आके बोलेगे ये मत करो, यू टेल द गवर्नमेंट यार फक ऑफ, मेरा पॉडकास्ट है. क्या कर लेगी गवर्नमेंट आपको? रणवीर की तरह थोड़ा परेशान करेगी, उससे ज़्यादा क्या कर लेगी? थोड़ा तो नहीं किया बेचारे को परेशान, बकवास था वो. और बीजेपी को थोड़ा सा सेंस आना चाहिए. क्या ये पॉडकास्टर्स को आप हैरेस कर रहे हो? न्यू जनरेशन जॉब्स एंड इकॉनमी विल बी क्रिएटेड हियर. फिर आप स्टूडियोज, आई डिडंट लाइक कुणाल्स कॉमेडी ऑन इन महाराष्ट्र, आई डिडंट लाइक इट. मैंने एक्चुअली देखा भी नहीं था जब तक जाकर स्टूडियो नहीं तोड़ा. अच्छा, स्टूडियो का मालिक क्या कुणाल है? वहाँ पे जो गरीब लोग थे उनकी नौकरी वो बंद हो गया स्टूडियो. क्या है, ऐसे थोड़ी होता है. यू कैन डिसएग्री विद कुणाल एंड आई डिसएग्री विद दैट कॉमेडी दैट ही डिड. आई डिडंट लाइक सम ऑफ द लैंग्वेज ही यूज्ड. ठीक है यार, डोंट वॉच इट और डोंट गो टू द शो. या यू कांट ब्रेक स्टूडियोज. ये नहीं होता यार. मैं तो आई गो वन स्टेप फॉरवर्ड. जो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये राज ठाकरे जी कर रहे हैं मराठी के ऊपर. मतलब मी मराठी माणूस आहे, मला मराठी पण बोलायला येते. असं नाही की मी मराठी माणूस नाही, मला मराठी बोलायला नाही येते. आणि मी फ्लुएंट मराठी बोलतोय. मी वाचतो पण आहे, आय कॅन रीड मराठी ऑल्सो. मला वाचायला पण येते सगळं. पण ते लोकांना मारायचं, टू बीट पीपल अप, पुअर पीपल. व्हॉट बुलिंग इज दिस? इज दिस आवर प्राइड? Why do you have to beat people? सब किसी को नहीं आता है, उसको सिखाओ ना. I agree, in Maharashtra you must learn Marathi. It's important to learn Marathi. It's compulsory. I agree. Karnataka you should learn the local language. Kerala you should learn the local language. Malayalam. Tamil Nadu you should learn Tamil. I'm not disputing it. You should make that effort. But you can't bully people. Gujarati you should learn Gujarati. But I think it should be on one person's choice कि उसको लर्न करना है नहीं करना. See, when you go to another place, for example, if I come to your house, you'll be very kind enough, you told me, please sit on the chair the way you want. I can't come on the chair and impose my way on your chair. It's your house. You have a wife, you have a... So similarly, if your house is your sacred place, people have their sacred places, their culture. So we are Indians, everyone's welcome to go everywhere, but you must respect the culture there or the traditions in those areas. I can't come to Delhi and impose my thought process. And similarly, or in Uttar Pradesh, and similarly somebody from there should not impose it in Maharashtra. I agree on that part. But you can't beat people up. No? You must learn. And ultimately, how will harmony happen? When I learn more about Delhi or Uttar Pradesh, Exactly. and somebody from Uttar Pradesh... No, from that point of view, I agree. Yeah. From that point of view. But मैं मारू पीटू. Yeah, on that lines only. और आप किसको पीट रहे हो? गरीब को पीट रहे हो? हिम्मत है तो पैसे वाले को मारते दिखाओ, पावरफुल को वाले को मारते दिखाओ. वो नहीं करोगे, आप गरीब को पीटोगे. किसका आपने तोड़ा? वो स्टूडियो तोड़ा. क्यों? व्हाई शुड दिस बिजनेस ऑफ मॉब्स हैज टू स्टॉप. ये गलत हो रहा है. एंड आई एम कॉलिंग आउट द बीजेपी. गलत कर रही है बीजेपी. क्या है, आप पॉडकास्टर्स के पीछे जा रहे हो? वेदर इट इज अ साइबर मॉब, whether it is the misuse of police agencies that happened in the case of Ranveer, or whether it is the misuse of mobs that happened in the case of Kunal Kamara, or misuse of beating up people on language, as Raj Thakre ji does. It's wrong. All of them are some sort of a mob, some sort of trolls. You're not supposed to do this. Tasim, you have done podcast with Ranveer. Yeah. How is he as a person? Great. In fact, I stood up for him when Okay. Those cases happened. I absolutely stood up for him. मैंने everywhere on TV, everywhere I stood up for him completely. But I mean, he said something ill, but it does not mean कि तुम इतना बड़ा उस पे कांड हो गया है. मत देखो यार. एक तो पहले उसने बोला एक अडल्ट शो में, which was subscriber based. जिन्होंने वो वीडियो वायरल किया उनकी गलती है. आप
प्राइवेट कंटेंट लेते वायरल कर रहे हो, इट वाज कंसेंशुअल एडल्ट बेस्ड, हम्म फिर आपकी मोरालिटी हर्ट होती है किसी और के प्राइवेट शो में जाकर देखने की। मत देखो भाई। I don't agree with what he said. I think it was quite Yes. disgusting. पर वो जोक भी तो ओरिजिनल थे, ऐसे जोक भी कहीं और से मारा था। और यार आप किसी को पुलिस स्टेशन ले जाओ, आसाम से पुलिस मुंबई आ रही, पुणे भी गई पुलिस किसी को नहीं, इज दिस व्हाट द जॉब ऑफ द पुलिस इज? द डीजीपी आसाम शुड हैव टोल्ड द चीफ मिनिस्टर, आई एम सॉरी सर, आई विल नॉट डू इट। गट्स नहीं है ना, बोलना चाहिए आई एम सॉरी सर, दिस इज रॉन्ग ऑर्डर्स। क्यों करें हम? That's the thing. You're dragging a podcaster, उसको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो। यार बकवास बात बोली, पर बकवास बात के लिए जेल थोड़ी होती है। और फिर लोग कह रहे हैं उसको फांसी मिलनी चाहिए, इज अ टेररिस्ट, ये तो इस तरह की बातें होती है। एक कमेडियन था जिसकी मैं बहुत इज्जत करता था, वो टीवी चैनल पर था मेरे साथ, और वही बात जो रणवीर ने जोक किया, वो नेशनल टीवी मुझे कहता है, शायद मुझे मज़ा आता है मेरे माँ बाप को उस पोजीशन में देखकर कि मैं रणवीर को सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई जिस चीज़ पे आप मांग रहे हो, किस पे एफआईआर हो, आप वो नेशनल टीवी पे मुझे कह रहे हो क्योंकि मैं रणवीर को डिफेंड कर रहा हूँ। तो जस्ट सी द काइंड ऑफ रिएक्शन वी डिड, दिस इज नॉट गुड। ये नहीं है। पॉडकास्टर्स, वी आर नाउ इन एन ईरा ऑफ न्यू एज जॉब्स। New age jobs, people will want freedom of speech, freedom of thought. I would rather have excess freedom than less freedom. Freedom में गलतियां होगी. There may be somebody on There your would be podcast. consequences. Yeah, there may be somebody on your podcast who may say something that somebody does not appreciate, and that's fine. And maybe he'll get trolled. Maybe you'll get trolled. Maybe people will even send hate towards it, and I'm okay with that. Maybe people will say boycott your podcast, boycott the podcast with Nick, which is fine. They have a right to do it, as long as their right is within the Constitution of India and peaceful. If I say something on your podcast that somebody does not agree with, they have no fucking right to come to your house and break your podcast studio or to drag you to the police station. They may not like your podcast. They may say boycott your podcast. They may even troll against your podcast. They have a right to even trend against your podcast. They have a right to bitch you out. 100%. Within the light of decency, not abuse you or your family. Decency. The Constitution gives them as much right as it gives me to say something Speak stupid. something on internet. Yeah. But they don't have a right to beat, to drag you to the police. That's not acceptable. To break your studio down. What the fuck? And cops are holding you responsible for your studio breaking down because you've had a guest who said something on the podcast, rather than protecting your rights. That's the problem. Free speech should always be protected, no matter what the cost. We have to fight to protect free speech, especially in this area.